Hello students. Today we are going to discuss about some problems that has been previously asked in the competitive exams. The problems is totally based on VBT, valence bond theory, hybridization, CFT, magnetic moment, CFSC, and color of the complex. Okay. So here is my first problem. The degenerate orbitals of CrH2O6 3 plus R. See, the degenerate means I would like to mention the degenerate means what? The complex that has the same energy orbital, same energy. Now this is what the echo complex. Why it is echo complex? Because water is present, and such complex is called as what? Echo complex. Now this CrH2O6. This is what my charge plus 3. Now remember that here the coordination number is what? It is 6. So definitely this is called as what? My octahedral complex. The abbreviation is what? It is OH. Now as it is what? Octahedral complex. The octahedral complex may be of two types. The first one is what? It shows the hybridization of sp3b2. The second complex shows the hybridization of b2sp3. Now in both the case, the degenerate orbitals that has been used by ligand is dx square minus y square and dz square. Here also the orbital used are dx square minus y square and dz square. Now this these are called as what? The outer orbital. These are called as what? Outer orbital complex. And this is called as what? Inner orbital complex. Inner orbital complex. Inner orbital complex. Now see friend, here the complex is octahedral. So in octahedral, the one point that should be noted, what is the point? The very important point that we should know, in octahedral complex, in octahedral complex, ligands, ligands approach, ligands approach along the dz square and dx square minus y square axis. Okay, dz square and dx square minus y square axis. Okay, so remember that what exactly happened? The repulsion is what? It is maximum in these two orbitals with the ligand electrons. So there is one relation. What is that relation? My second important point is that, what is my second important point? Higher higher the repulsion, higher the repulsion between ligand electrons, ligand electrons, and dz square, comma dx square minus y square orbitals. Hmm? यानी कि क्या होता है कि ligand electrons और ये जो मेरे along the axis orbitals है, उनमें repulsion ज़्यादा रहता है. So higher the repulsion, I can say that here. What I can say that, see, so what I can say that higher the repulsion, higher the repulsion, higher the repulsion, more will be, इसका कोरिलेशन कैसा रहेगा? More will be energy, more will be energy of orbital and unstable and unstable. तो वो ऑर्बिटल क्या रहता है? अनस्टेबल रहता है. तो यहाँ पे मेरा ऑर्बिटल है, यहाँ पे मेरा ऑर्बिटल कौन सा कॉम्प्लेक्स है? CrH2O6 + 3. ओके, सो Cr+3 यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या आएगी? ये तो मेरा न्यूट्रल है. दिस इज व्हाट माय न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स.
और ये इसका चार्ज क्या रहेगा, जीरो रहेगा. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ chromium, that becomes plus 3. So this is what my plus 3. So chromium Z is equal to 24, atomic number 24, 4s1 3 5. This is what the most stable electron configuration. So Cr plus 3, that is equal to what, 4s0 3d. तो यहाँ से कितने जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे. यानी कि मैं क्या करूँगा, see here, so how many electrons that will be in the d orbital. So if this is what my d orbital, one, two, three, this is what my d orbital. I'll show it here. I'll show it here. D3 high spin. D3 high spin. Why high spin? Because my complex is what it is, weak field. So this is what my EG. EG is what it is, W degenerate, and P2G is what my it is triply degenerate. I have to fill the three electrons. One, two, three. So which orbitals that has been utilized by the ligands, which orbitals that has been utilized by the ligand? So these orbitals that has been utilized by the ligand. So which are the orbitals? Degenerate orbital d x square minus y square and d z square. So these are what my correct answer. So you have to see which options are correct. So dz square, okay. Dxz, no, this is not the correct option. Dxz and dyz, yes, these are what the uh, degenerate orbital, but that they cannot be used by the ligand, so this is not my option. Dyz and dz square, this is what my degenerate orbital that has been used by ligands, but not this, so this is not my correct option. Dx square minus y square and dz square, so this is what my correct option. So option D is what my correct. We'll move on to the next question. Yes. Now see, the next complex is what? The next complex is my COF3 H2O3. This is what my complex. This is zero complex. The charge on the complex is what it is. The crystal field stabilization energy. This is what the ask. Okay, and the answer which has been given. Okay. Now remember that the conditions that have been also mentioned, that is what, delta zero is greater than P. Now what is delta zero? Delta zero is what, crystal field splitting crystal field splitting factor for octahedral, for octahedral complex. Now this is what my anionic ligand, and this is what my neutral ligand. So F carries minus one charge and water carries zero charge. So first of all we'll find the oxidation state of cobalt. So it is X plus how many fluorine ligands are there? 3 into minus 1 plus 3 into 0, that is equal to what, 0. So oxidation state of cobalt is what it is, plus 3. Okay, it is plus 3. Now as the conditions which has been given, as the conditions which is given, what is the conditions? The condition is what? Now what is the condition? This is what my delta 0 is less than P. Now if, see, if delta 0 is less than P, we can call it as what? Weak field complex. Weak field Weak field complex. Now weak field means what? It is high speed. It is what? High speed. Now coming back to the problem, CO, neutral CO, which is having the atomic number 27, it shows the electron configuration 4s2 3d7. Now but here in the complex CO plus 3 is given, so 4s0 3d6. So this is what my 3d6. So I have to show, I have to draw the diagram of splitting
This is 1, 2, 3 T2G, and this is what my EG. This is what my D660 I spin weak ligand field. So I have to fill the 6 electrons. So 6 electrons, 1, 2, 3. Now remember that this is what my weak field ligand. So delta 0 is what it is less than P. So definitely my fourth electron will goes into the higher energy level 4, 5, and 6. Okay. Now my formula for what is my formula? My formula for CFSE is what? CFSE is equal to minus 0.4 into n number of electrons in T2J orbital delta 0 plus 0.6 into n Eg plus pairing energy. Now remember that this pairing energy we are going to neglect. This pairing energy P is neglected. P is neglected in weak field ligand. But P is considered when the ligand is what? It is a strong field ligand. So CFSE is equal to now 0.4 into number of electrons in T2J orbital. कितने electrons? 4 electrons है. So 0.4 into 4 delta 0 plus 0.6 into EG. EG में कितने electrons है? 2 electrons है. So 2 into EG. Okay. So how much it is? This is 1.6 delta 0 plus 0 point, no, it is coming 1.0, it is coming 1.0, 1.2, 1.2 EG, delta 0, sorry, delta 0. So CFSE, that is coming out to be, it is minus 0.4 delta 0. So this is what my answer. This is what my answer. Now we'll see the options in the problem. Okay, so this is not the correct answer. This is my correct answer. This will not be a correct answer. ये भी नहीं हो सकता ये D. Okay, so this is what my correct answer. Okay, now the next problem. Yes, the molecules in which the hybrid orbitals involve only one d orbital. See, only one d orbital. Only one d orbital. Now here, this is what my coordination number 6. See, this is what my coordination number 6. So definitely if it is coordination number 6 and if it is what weak ligand, so इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3d2 ही आएगा. तो इसमें तो दो ऑर्बिटल है, अपने को बोला है एक ऑर्बिटल, तो डेफिनेटली दिस विल नॉट माय करेक्ट ऑप्शन. सो वी हैव टू यूज द एलिमिनेशन मेथड. जब भी एमसीक्यूज रहेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि दो ऑप्शंस बराबर रहेंगे और दो ऑप्शंस ये गलत रहेंगे, उसका दैट इज नॉट एनी कोरिलेशन ऑफ दैट ऑप्शन विद द प्रॉब्लम. ओके, सो स्ट्रेट अवे वो ऑप्शंस इमीडिएटली कैंसिल आउट हो जाएंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ यू सी दिस कॉम्प्लेक्स, this is what my molecule, that is what XCF4. So definitely this is also what the octahedral complex, that is what sp3d2, sp3d2. Okay, sp3d2. Okay, so if we consider this one, okay, if we consider this one, so how we are going to get this one? So let us say take VRF5. Now here central atom is what? Central atom is what? I write here central atom is my fluorine atom. देखिए, sorry, central atom is what my? It is bromine. So fluorine, chlorine, and bromine. So this is what my, this is coming. Fluorine is coming in my second period. So 2s2 2p5. This is coming. Chlorine is what? It is coming in the third group, third period, 3s2 3p5. And this bromine is coming
in the fourth period, that is 4s to 4p5. So bromine, the outermost electron configuration 4s to 4p5. So so Br here, what exactly happened? Br is making 5 covalent bond with the fluorine atom. Okay, so let's see. This is what my 2 electrons, and this is what my 5 electrons. So one, two, three, four, five. ये 5 electrons 4p में, 2 electrons s में. Now Br is making 5 covalent bond with the F. So Br के 5 electrons ये separate orbital में होने चाहिए. So this is what my ground state electron configuration. Now the next one is what we have to make. This is 4s, 4p. This is my 4s, 4p, and the next which is coming, that is also what, 4d. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So 1, 2. अभी ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट करने पड़ेंगे. ओके. 1, 2, 3. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएगा. ओके. So 5 electrons of Br that will occupy in the separate orbitals. Now the next electron is what? The next electron of what? The fluorine. So fluorine comes in this orbital. Okay. 3, 4, 5. So what is the hybridization? What is the hybridization that we are getting here? So the hybridization is what? This is what my electron configuration at excited excited state. So this is what my electron configuration. This is sp3d2. So again, sp3d2 means what? How many orbitals that has been utilized? 6 orbitals are utilized. 6 orbitals are utilized. So here, not, this will not be a correct option, because यहाँ पे 2 orbitals utilize किए, हमें तो एक ही चाहिए. My next option that I'm going to think about, that is NiCN4 2 minus cyano complex. Okay. Next complex is what? My NiCN4 2 minus. देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है साइनाइड, ये जो साइनाइड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज व्हाट माय एनायनिक लिगैंड. ये मेरा एनायनिक लिगैंड है. ये मेरा एनायनिक लिगैंड है और ऑलवेज इट कैरीज -1 चार्ज, और ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड. ओके. फिर अभी यहाँ पे निकेल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकलते हैं. एक्स प्लस हाउ मेनी साइनाइड लिगैंड्स? 4. ईच कैरीज -1 चार्ज. टोटल चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स, दैट इज व्हाट, -2. सो ये क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू व्हाट? +2. सो एक्स के ऊपर कितना चार्ज आता है? +2 चार्ज आता है. दैट इज व्हाट, निकेल इज प्रेजेंट इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो स्ट्रेट अवे निकेल, निकेल +2 क्या रहेगा इसका? 4s03d8. 4s03d. Okay, 4s03d. So this is what my 3d8. I'll show this. This is what my 3d8. 1, 2, 3, 4, 5. This is what my 4s. This is what my 4p. 1, 2, 3. So 3d, 4s, and this is what my 4p. Now 8 electrons I have to fill. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 electron. Now this is what my electron configuration in ground state. This is what my electron configuration in ground state. Now see what exactly happened whenever the 4 cyanide ligands that has been approached towards nickel. What exactly happened? These electrons, they will get paired. Why they will get paired? Because cyanide is what? It is a weak ligand. सॉरी, इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड. सो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने के कारण क्या होता है कि जो मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिपेल्ड होते हैं. और वो क्या होते हैं? उनमें उनमें क्या होता है? रिपल्शन होता है. ये जो डी मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दीज इलेक्ट्रॉन विल गेट पेयर. तो ये अंदर जाता है. तो कैसा आएगा? ये देखिए, 1, 2, 3, 4,
5, this is 4s, and this is what my 4p. 1, 2, 3. So 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, ये से 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए डी डी एट सिस्टम के। अभी मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, अभी मेरे साइनाइड के लिगेंड्स है, साइनाइड लिगेंड्स के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हो गया मेरा डी एस पी टू, डी एस पी टू। और जब भी मेरा डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन में रहता है तो वो रहता है स्क्वायर प्लानर। वो क्या रहता है, स्क्वायर प्लानर। सो विच ऑर्बिटल दैट हैज बीन यूज्ड इन स्क्वायर प्लानर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरा रहता है। और उसका जो डायग्राम है वो कैसे आता है, वैसे आता है यहाँ पे सेंटर निकेल 1 2 3 4, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, और ये साइनाइड, और होल चार्ज -2। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ओनली वन, डी ऑर्बिटल। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन है डी। Okay. Now we'll move to the next question. See, the next question is the number of possible isomers for platinum En NO2 twice is. Now remember that here En is what? It is symmetrical. It is symmetrical bidentate, or we can call it as what? Chelating ligand. Chelating ligand. Okay. Now this NO2, यहाँ पे ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, और ये NO2 है, ये NO2 क्या है, एम्बीडेंटेड लिगैंड, एम्बीडेंटेड लिगैंड, ये मेरा एम्बीडेंटेड लिगैंड है। ओके, ये बाइंडिंग ऐसे भी हो सकता है थ्रू, दैट इज व्हाट, ये एन के थ्रू ऐसे बाइंड हो सकता है, और ऑक्सीजन के थ्रू ये ऐसे भी बाइंड हो सकता है। ना नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स क्या रहते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स व्हाट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये मेरा फॉर्मूला है। ओके, लेकिन ये मेरा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लानर complex does not give optical isomers, optical isomers, square rectangular complex optical isomers नहीं दिखाते, because why, because they possess, they have plane of symmetry, plane of symmetry, यानी कि ये वो एक ही प्लेन में रहते हैं, सो दैट्स व्हाई। तो ये क्या होगा, ये मेरा हो गया जीरो, ये मेरा हो गया जीरो। अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में हम देखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। तो दिखाने के लिए मैं ऐसे लिखा था, तो ये मेरा रह गया ई एन, मैं ऐसे निकालता हूँ, दैट इज व्हाट एथिलीन डायमाइन, और ये मेरा हो गया NO2, ये NO2, NO2। देखिए अभी यहाँ पे क्या बात होती है, जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे ऑलवेज यूज cis and trans, दे ऑलवेज यूज cis and trans। देखिए cis कब होता है, cis कब होता है, जब सिमिलर ग्रुप्स, सिमिलर ग्रुप्स
similar groups are at 90 degree to each other. Similar groups are 90 degree to each other. जब ऐसा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब सिस आइसोमर्स होते हैं। और जब सिमिलर ग्रुप्स आर at 180 degree to each other। तो यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे मेरा सिस आइसोमर भी नहीं मिलता, यहाँ पे मेरा सिस आइसोमर भी नहीं मिलता। यानी कि देखिए प्लैटिनम ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे NO2 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे NO2 रखता हूँ तो इसके सामने ये जो NO2 रखा है तो मेरा एथिलीन डायमाइन ये नहीं आता। ओके, एथिलीन डायमाइन ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा एथिलीन डायमाइन। बट दिस इज व्हाट माय स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में ऐसा तो नहीं लिख सकता, ऐसा तो नहीं लिख सकता क्योंकि प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। सो दिस इज व्हाट द रॉन्ग मेथड। तो ये क्या होता है, मेरा ट्रांस आइसोमर भी नहीं देते ये, मेरे ट्रांस आइसोमर नहीं देते, ट्रांस आइसोमर नहीं देते, ट्रांस आइसोमर नहीं देते। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट, if they are not giving the trans isomers, definitely we are not going to think about the cis isomers। जब ट्रांस आइसोमर्स रहेगा तभी तो सिस आइसोमर्स दिखाएगा, जब सिस आइसोमर्स रहेगा तभी तो ट्रांस आइसोमर्स दिखाएगा। जब ट्रांस आइसोमर ही नहीं पॉसिबल है वहां पे तो सिस आइसोमर्स भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सो व्हाट आई कैन से दैट यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है, जीरो है। ऑप्टिकल आइसोमर्स ये भी क्या है, जीरो। तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगैंड यानी कि जो NO2 है वो क्या होता है, इट शोज इट शोज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अटैचमेंट टू द मेटल सेंटर। तो कैसे होता है देखिए, मैं एक कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखता हूँ, दैट इज व्हाट NO2 ट्वाइस थ्रू N बाइंडिंग। यहाँ पे नाइट्रोजन के through the nitrogen atom, the ligand it has got bind with the platinum, the ligand it has got bind with the platinum। so मेरा ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया, this is what my one complex that I am showing here। okay, तो ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स हो गया। the second complex that I am going to show it here, देखिए प्लैटिनम है, ईयन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक NO2 के थ्रू बाइंड हो सकता है और एक ONO थ्रू के, दैट इज ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड हो सकता है और एक नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड हो सकता है। सो ये मेरा दूसरा कॉम्प्लेक्स रहेगा, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स आ सकता है। तीसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा आ सकता है, देखिए तीसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा आ सकता है, प्लैटिनम EM, दैट इज व्हाट ONO ट्वाइस, ऐसे भी आ सकता है। यानी कि ये कैसे हो सकता है, देखिए यानी कि ये ऐसे हो सकता है, यानी कि प्लैटिनम है, ये मेरा इथेनिन डायमंड है, NO2 ये है, ये मेरा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या है, प्लैटिनम, ये मेरा EN है, एथिलीन डायमाइन, ये NO2 है, नाइट्रोजन थ्रू अटैचमेंट है, और ये ONO है, ये मेरा सेकंड कॉम्प्लेक्स हो गया। तो थर्ड कॉम्प्लेक्स इज व्हाट, प्लैटिनम, ये मेरा EN, बाद में ONO, और ये ONO, ये मेरा थर्ड कॉम्प्लेक्स है। So this is what the way that I should get it, the three isomers, possible isomers for the given compounds। So three isomers are possible, so correct option is what, it is not the correct option, not, this is what my correct option, that is what 3, so B option is what, is my correct। Now move to the next question, that is the pair in which both the species have the same magnetic moment, both the species have the same magnetic moment। now remember friend, यहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्स है, ये CrH2O6 है,
ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा तीसरा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और ये चौथा कॉम्प्लेक्स, और ये दिस इज व्हाट माय फिफ्थ कॉम्प्लेक्स. Okay, so we'll start one by one. We'll think about Cr. Cr H2O 6 plus 2. Now water is what? It is a weak ligand. Water is what? It is a weak ligand. So oxidation state of chromium is what? It is coming Cr plus 2. So what should be the oxidation state? This is 4s0 3d4. Now this is what my weak ligand field. ये मेरा क्या है? Weak ligand field. तो क्या आएगी? देखिए जब भी हम मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में थिंक करते हैं, तो डेफिनेटली वी हैव टू टॉक अबाउट CFT. हम CFT कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करेंगे. तो दिस इज व्हाट माय EG E2G D4 सिस्टम है, हाई स्पिन सिस्टम है. 4 electrons I have to fill. So 1 2 3 4. So how many unpaired electrons? So here unpaired electron is what? It is 4. Now see, spin only formula क्या रहता है मेरा? स्पिन ओनली फॉर्मूला है म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m into n plus 2 bm. दैट इज व्हाट बोर मैग्नेट्रॉन. now देखिए जब भी मेरा अनपेड इलेक्ट्रॉन, देर इज वन ट्रिक, और आई एम डूइंग वन ट्रिक. मेरी ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक क्या है यहाँ पे. जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन वन रहेंगे तो मेरा म्यू इफेक्टिव कितना रहेगा? 1.9 bm रहेगा. जब भी n इज इक्वल टू 2 रहेगा तो मेरा म्यू एस कितना रहेगा? 2.9 bm रहेगा. जब भी मेरा n इज इक्वल टू 3 रहेगा तो मेरा म्यू एस 3.9 रहेगा. 3.9 और 3.87 समथिंग लाइक दैट. ओके, सो देर इज नो नीड टू कैलकुलेट म्यू. ओके, तो यहाँ पे मेरा ये क्या हो गया? 4 हो गया. नाउ दिस इज व्हाट माय वन. नाउ द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज COCl4. The next complex is COCl4 2 minus. COCl4 COCl4 2 minus. Now here chlorine is also what? It is a weak ligand field, but it carries -1 charge. So definitely my cobalt is what? It is having the +2 charge. So x plus 4 into -1, that is equal to what? -2. So therefore x is equal to what? It is +2. So CO plus 2, that comes out to be 4s0 3d7. तो ये मेरा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीड यहाँ पे लिगेंड 4 है, तो ये मेरा हो गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. coordination number is 4, so 1 2 1 2 3. So coordination number 4, so this is what my tetrahedral complex, this is my E, this is what my T2, this is what my D7 system, high spin. All tetrahedral complex, they are what? High spin. So 7 electrons that I have to fill here. So 1 2 3 4 5 6 7. So कितने हैं यहाँ पे? n is equal to 3. n is equal to 3. So definitely my म्यू कितना आता है यहाँ पे? म्यू एस आता है मेरा 3.9. तो देखिए ये 3.9 है और ये 4 है, 4.9 है, 4.9. तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन इज व्हाट? इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता. Then think about the next one, that is what? COOH4. Next option is what? CO COOH4 2 minus. So again this is what my tetrahedral complex. This is OH minus. OH minus is what? It is weak ligand field and it carries -1 charge. So definitely oxidation state of cobalt is what? It is +2. So क्या आता है? CO +2 आता है. ओके, तो क्या आता है? 4s0 3d7. तो सिमिलरली इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके भी कितने आएंगे? देखिए
कितने आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 आएंगे। तो डेफिनेटली माई म्यू एस इज व्हाट इज 3.9 bm. Next is APNH3 6 2 plus. APNH3 APNH3 6 APNH3 6 2 plus. Yes, yes, yes. It is 2 plus. It is 2 plus. It is what? It is plus 2. Now remember that NH3 is what? It is again moderate strong ligand field. Strong ligand field है, लेकिन वो हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, वो वीक जैसा ही बिहेव करता है. सो इट इज़ न्यूट्रल. So it is neutral. So oxidation state of Fe is what? It is plus 2. That is what? 4H0 BD6. तो इसका क्या आएगा? दिस इज व्हाट माय हाई स्पिन आएगा. तो कैसा आएगा ये देखिए, 1 2 3 T2G 1 2 EG. This is D6 system. D6 system. This is what my high spin. Okay, so I have to fill the 6 electrons. 1 2 3 4 5 6. So how many electrons are there? Unpaired electron 1 2 3 4. So n is equal to what? N is equal to what? 4. So if n is equal to 4, my mu s is equal to what? 4.9. Simple. Okay. So this is 4.9, and its neighboring, its corresponding complex is what? It is 3.9. So again, my second option is not the correct option. So ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता. Then we have to think about this one. देखिए यहाँ पे CrH2O6 ये हमने निकाला है, तो इसका कितना आता है? इसका आता है n is equal to 4. कितना आता है? n is equal to 4. और ये जो कॉम्प्लेक्स है FeH2O6, ये इसके जैसा ही आएगा. FeH2O6 ये कैसा आएगा? इसके जैसा ही आएगा. ओनली द थिंग इज व्हाट, the ligands are different, but the rest of the thing is what? It is the similar. So just see here. तो यहाँ पे भी इस कॉम्प्लेक्स में FeNH3 6 में भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी न्यूट्रल लिगैंड है, अमोनिया भी न्यूट्रल लिगैंड है. तो यहाँ पे H2O न्यूट्रल लिगैंड है, और वीक फील्ड है. तो डेफिनेटली इसका भी कितना आएगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आएगा. तो ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली इसका म्यू एस कितना आएगा? इसका म्यू एस आएगा 4.9 बीएम आएगा. अगर इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसका भी म्यू एस कितना रहेगा? इसका भी म्यू एस 4.9 बीएम रहेगा. सो माय करेक्ट ऑप्शन इज, व्हाट? दिस इज व्हाट माय करेक्ट ऑप्शन. सॉरी, दिस इज व्हाट माय करेक्ट ऑप्शन. So option B is what my correct option. Option B is what my is correct option. Option C is what my correct option. C is what my correct option. Now we'll move to the next question. देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, वो बहुत important है. Why it is important? See, so many things that we are going to learn from this question. देखिए we are going to check the strength of ligand. Strength of ligand हम कहाँ से चेक करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड हम कहाँ से चेक करते हैं? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या करते हैं? चेक करते हैं. सो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इफ समबडी does not memorize the spectrochemical series, there is one trick. I'll show you the trick. देखिए कार्बन है, नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन है, और फ्लोरीन है. जो कार्बन कंटेनिंग जो लिगैंड्स रहते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, जो कार्बन कंटेनिंग जो लिगेंड्स रहते हैं वो हाईली स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहते हैं. हाईली स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड है वो भी क्या रहते हैं?
वीक लिगेंड रहते हैं, वीक लिगेंड रहते हैं, वीक लिगेंड रहते हैं। जो फ्लोरीन फ्लोराइड कंटेनिंग और हैलाइड कंटेनिंग लिगेंड्स हैं, हैलाइड कंटेनिंग इसको मैं बोलता हूँ हैलाइड कंटेनिंग, वो भी क्या रहते थे, वीक लिगेंड फील्ड। और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड है, ये क्या रहते हैं, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, strong ligand. Exceptional cases are there, so we have to see the exceptional cases. We have to see the exceptional cases. Okay, तो अगर NH3 रहेगा और NO2 रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग कौन है? अगर ये दो लिगैंड दिए रहेंगे तो इसमें से स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन रहेगा? तो डेफिनेटली नाइट्रोजन के बाद, नाइट्रोजन फर्स्ट आइटम देख लेना, ये भी यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। ओके, तो स्ट्रेंथ सेम आएगी। उसके बाद जो एटम है वो देखने का है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन। सो डेफिनेटली ये क्या कहेगा, ये क्या रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड दिखाएगा एज कम्पेयर टू NH3। ओके, तो इस वजह से, इस तरीके से हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। नाउ द first complex is what? COH2O6 3 plus, CO COH2O6 3 plus. We have to see the first complex is what? COH2O6 3 plus. देखिए यहाँ पे water is what? It is a weak ligand. Water is what? It is a weak ligand field. और ये कैसा है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आएगी प्लस। देखिए जब भी वाटर कोबाल्ट के साथ रहता है और कोबाल्ट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, सो दिस इज व्हाट माय एक्सेप्शनल केस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब एक्सेप्शनल केस हम देख रहे हैं। तो कोबाल्ट क्या होता है? कोबाल्ट इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड, कोबाल्ट इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड। तो कोबाल्ट कैसा रहेगा? सो CO प्लस 3, दैट इज व्हाट, 4S0 3D6। तो स्प्लिटिंग कैसे रहेगी? ये देखिए 1 2 3, ये मेरा D6 सिस्टम है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड बोला तो कैसा रहेगा? लो स्पिन रहेगा। ये मेरा EG है, ये मेरा T2G है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज, सो कंडीशन इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड रहेगा तो मेरा डेल्टा जीरो इज ग्रेटर देन P, सो आई हैव टू फिल द 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 2 3 4 5 6। ओके, गैप ज़्यादा रहने की वजह से इलेक्ट्रॉन विल नेवर गोज इनटू द एक्साइटेड स्टेट, सो EG इज व्हाट? इट इज माय एक्साइटेड स्टेट, EG is what my, it is excited state. Okay, so here the two orbitals that has been utilized by the ligands, यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स है, वो लिगैंड क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू VBT कैसे आएगा ये? अकॉर्डिंग टू VBT ये ऐसा आएगा, मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सो दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 4S, दिस इज 4P, okay, 4P, okay. So this is 3D, this is 4S and 4P, ये मेरा ग्राउंड स्टेट रहेगा, ये मेरा ग्राउंड स्टेट रहेगा। ग्राउंड स्टेट में कैसे रहेगा? ग्राउंड स्टेट रहेगा, दिस 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 2 3 4 5 6। देखिए कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और वीक लिगैंड है। जब भी CO +3 में रहेगा और उसके साथ वीक लिगैंड रहेगा, तब क्या होगा? कोबाल्ट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड, क्योंकि चार्ज क्या है? हाई चार्ज है, हाई चार्ज। ओके, तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हो जाएंगे, तो मेरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, दिस इज व्हाट माय 4S एंड दिस इज व्हाट माय 4P। ठीक है, सो ये मेरा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे कैसे आएगी इलेक्ट्रॉन्स, कैसे फील रहेंगे? वाटर है, हर वाटर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 वाटर के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D2sp3। नाउ द इन द inner orbital of the D that has been utilized, so that's why this is what called as inner orbital
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी d2sp3, यानी कि विच ऑर्बिटल दैट हैज बीन यूज्ड, dx square minus y square and dz square. Now let's check the options. We'll go with the options. तो फर्स्ट का क्या आएगा, फर्स्ट का क्या आएगा, d2sp3। तो कहाँ पे d2sp3 है, देखिए कौन सा ऑप्शन आता है, d2sp3, 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 ओके, d2sp3। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नो देखिए यहाँ पे ये CO F6 3 माइनस है, तो इसका हम निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे CO F6 3 माइनस, CO F6 3 माइनस। So my next complex is what, CO F6 3 minus, CO F6 3 minus, CO F6 3 minus। देखिए यहाँ पे ए पे ये वीक लिगेंड फील्ड है, वेरी वीक लिगेंड फील्ड, आयनोनिक लिगेंड है, कैरीज -1 चार्ज। सो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट is what it is +3. Now remember that cobalt is what it is in the high oxidation state, but this is what very weak, very very weak. So even if the cobalt is in the high oxidation state, it never shows the strong ligand. It never shows the strong ligand field because my ligand is what it is very weak. Okay. So what exactly happened here? The CO plus 3, 4s0, 3d6. So कैसा आएगा ये? देखिए 1 2 3 4 5 4s. This is my 4p and this is what my 4d. 1 2 3 4 5, 3d, 4s, 4p और ये 4d। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। तो सो ये मेरा रह गया ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये मेरा रह गया ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। नाउ देखिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि माय फ्लोरीन इज व्हाट इट इज़ वेरी वीक लिगेंड फील्ड। सो 1 2 3 4 5 4s 4p और ये 4d, 1 2 3 4 5। सो ये मेरे रह गए एक्साइटेड स्टेट। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सॉरी 6 6। तो मेरे फ्लोरीन के लिगैंड कैसे आएंगे, देखिए फ्लोरीन के लिगैंड कितने फ्लोरीन है, 6। ओके, तो 6 फ्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या हो गया मेरा sp3d2। देखिए ये बाहर के d ऑर्बिटल यूटिलाइज किए, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये मेरे क्या रह गए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, outer orbital complex. Now d orbitals are used dx square minus y square and dz square. Okay, remember whether it is inner or outer orbital complex, the degenerate orbitals that has been utilized by the ligands are dx square minus y square and dz square in case of octahedral field. So देखिए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो इसका क्या आ गया, इसका मेरा आ गया sp3d2 आ गया, इसका क्या आ गया, इसका d2sp3 आ गया। तो सेकंड sp3d2, sp3d2, d2sp3, तो ये कैंसल आउट हो गए। अभी देखिए इसके बारे में। नाउ फॉर ईच कॉम्प्लेक्स इफ सच काइंड ऑफ ऑप्शंस आर गिवन, you have to show it by valence bond theory, you have to show it by valence bond theory। okay, so next complex is what, next complex is next complex is what, my CO NH3 6 plus 3। देखिए यहाँ पे NH3 is what it is, moderately strong ligand field, it is neutral, ये न्यूट्रल है। और जब भी एक्सेप्शनल केस है, जब भी ये NH3 CO प्लस 3 के साथ रहता है, सो इट शोज स्ट्रॉन्ग ligand field, स्ट्रॉन्ग ligand field दिखता है।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट क्या आती है यहाँ पे +3 आती है. क्यों कैसे आती है? बिकॉज सी इफ यू चेक x, the oxidation state of x, we assume that कितने ammonia ligand is 6, so 6 into 0, charge is 0, +3. So क्या आती है x is equal to 1 +3. तो oxidation state of cobalt is what is +3. So CO +3 is what 4s0 3d6. So as per the valence bond theory, 1 2 3 4 5. This is 4s 4p, and this is what my 4d 1 2 3 4 5. This is 3d, this is 4s 4p, and this is what my 4d. Now remember that I'm telling you that this is what my complex. When NH3 is there, CO, if CO is there in the +3 oxidation state, it shows the strong ligand field. That means pairing takes place. So this is what my ground state. This is what my ground state electron configuration. So 6 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 electrons. Okay, but in when the ligands that has got approach towards the metal, 2, 3, 4, 5, 4s, 4p, and this is what my 4, 1, 2, 3, 4. This is what my excited state electron configuration. So what will happen? These electrons will get paired. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 6 ammonia is there. Each ammonia is carries two charge, two electrons. So definitely 6 amine ligands that has 12 electrons. So we have to show the 12 electrons. We have to show the 12 electrons. Okay, so 12 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So what is coming? So this is what my inner orbital complex, that is D2sp3. D2sp3. So remember that for this complex, for this complex, my hybridization is it is coming, that is what D2sp3. D2sp3. तो पहला क्या आता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. दूसरा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. तीसरा फिर से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. तो कौन सा आता है? देखिए D2sp3, D2sp3, sp3 D2 sp3 and D2sp3. So my B option is what my correct option. B option is my correct option. Okay. So in this way, you should have to apply the knowledge to the concerned problem. Okay. Thank you.